वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में और आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है The Untold Story of Mahavtar Babaji, the Yogi who defies time and space, the founder of Kriya Yoga। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओपन बुकलेट। 203 BC, Parangipetai, Tamil Nadu. On November 30th, a divine child was born. His birth name was Nagrajan. In English, it translates to the King of Serpents. His father was the priest of a village temple. At the age of 5, Nagrajan gets kidnapped and sold as a slave in Calcutta. Fortunately, his new owner was a kind man and freed him soon after. He then joined a group of wandering sannyasis, people who live the life of renunciation, due to their love for God and radiant faces. And hence began the legend of how Nagrajan became one of the highest-level spiritual figures that have ever graced the earth. The teacher of teachers, revered father Mahavtar Babaji. For several years, he travelled to different places and studied holy scriptures like the Vedas, Upanishad, Mahabharat, Ramayana, and Bhagavad Gita. At the age of 11, he embarked on a difficult journey by foot and boat with a group of ascetics to Kataragama, Sri Lanka, where he met Siddh Boganath and became his disciple. He performed intensive yogic sadhana with Siddh Boganath, who then inspired Nagrajan to seek his initiation into Kriya Kundalini Pranayam or Vasi Yogam from Siddh Agastya. Where the term Vasi means control or mastery, and Yogam refers to the union of the individual self with the universal consciousness. It is a yogic practice that involves a series of breathing techniques, physical postures, and mental focus, with specific patterns of breathing that synchronize the breath with the movements of the spine and the chakras. It is a powerful technique that helps the practitioner to still the mind, dissolve karma, and experience the blissful state of inner peace and unity consciousness. It is said to activate the Kundalini, a spiritual energy believed to be coiled at the base of the spine, and raise it up through the chakras, the subtle energy centers of the body, to attain self-realization and oneness with the divine. Following the instructions of his guru, he became a disciple of Siddh Agastya and was initiated into the secrets of Kriya Kundalini. After getting initiated, Nagrajan travelled to Badrinath and spent 18 months practicing yogic kriya taught to him by his gurus, which led him to attain self-realization. Acquiring the capacity to surpass the limitations of time and space and attaining mastery over the physical realm, he became renowned by various titles, including Mahavtar Babaji, Mahamuni, Triambaka Baba, Shiva Baba, and Badua Baba. 1861, the Himalayas. While walking in a desolate area, Lahide Mahashe, who worked as an accountant for the British government, heard a voice calling his name. Following the voice up the mountain, he encountered tall and divinely radiant Mahavtar Babaji. Despite being over 2,000 years old, Babaji appeared no older than 25, leading him to believe that the spirit of Babaji may have taken on a youthful form to communicate with him. Babaji initiated him into Kriya Yoga, revealing that he had been his guru in a past life. Though he had no memory of this, Babaji tapped his forehead and the memory flooded back. Babaji instructed him to initiate others into Kriya Yoga and to spread the message around the world. Although he desired to remain with Babaji, he was told to return and teach Kriya Yoga to others. Perhaps Babaji felt the time was right to share the message of Kriya Yoga with the world, and Lahide Mahashe would be the person to initiate it. 1894, Kumbh Mela, Allahabad. This time, Babaji was spotted in the form of a sadhu or sage by Swami Sri Yukteswar Giri, a disciple of Lahide Mahashe, who later became the mentor of Yogananda. At the Kumbh Mela, he was seen sitting under a tree with a group of attractive disciples. Onlookers noticed the striking resemblance between the Lahide's description of Babaji and the young sadhu. Babaji talked about the West and its materialism, and the need for a golden middle path of activity and spirituality between East and West. The master informed Swami Yukteswar that he had a part to play in this exchange and that he would be sent a disciple for him to train and achieve this. That disciple was Paramhansa Yogananda.
1920, Calcutta, West Bengal. Babaji appeared at Yogananda's doorstep and identified himself as the great Mahavtar Babaji that Yogananda's master had told him about. Babaji instructed Yogananda to go to America, where he would preach the gospel of Kriya Yoga and spread the great yogic science to the West, saying, "Follow the behest of your guru and go to America. Fear not, you shall be protected. You are the one I have chosen to spread the message of Kriya Yoga in the West." Yogananda followed Babaji's command and spent over 30 years in America as an ambassador of Kriya Yoga, greatly influencing hundreds of thousands of people, just as Babaji had predicted. Yogananda shared that Babaji also had a self-realized and enlightened sister named Mataji, who was described as a young and majestic woman. During one of their meetings, Babaji mentioned to Mataji that he was considering leaving his physical body. However, Mataji pleaded with him not to do so, saying, "Please do not ever relinquish your form." In response, Babaji said, "Be it so. I shall never leave my physical body. It will always remain visible to a small number of people on this earth." If you like our content, we request you to please show your support by subscribing and motivate us to make more content. 1935, the Himalayas. While wandering in the northern Himalayas near Badrinarayan, Swami Kebalananda, who was a disciple of Lahidi and the Sanskrit tutor of Yogananda, took shelter in a cave. The deathless master appeared before him, manifesting himself from within a recess of the cave. He imparted some spiritual advice to Swami Kebalananda and left a message for Yogananda, stating that he would not be able to meet him at that time, despite Yogananda's eager anticipation, but promised to meet him on another occasion. Mahavtar Babaji is considered to have achieved the highest spiritual state, which is beyond human comprehension, and is therefore free from the cycle of birth and death. His primary objective is to aid prophets in fulfilling their unique missions and only inhabits a physical body to help humanity. He has been doing so for thousands of years and hence perceived as an immortal being with access to a higher level of consciousness and awareness. He is said to be chosen by God to remain on earth for the duration of this particular world cycle, which stretches on for thousands of years. He typically astral travels to different points of interest on Earth time to time and is presumably moving about in the Himalayan mountains with a small group of disciples where he was last seen and keeping a watchful gaze on those earnestly seeking the ultimate. He can appear in any form he wishes to help humanity break free from its worldly bonds and is regarded as supreme and unparalleled among all saints and sages. His teachings are rooted in the ancient wisdom of Yoga Sutras and emphasize the importance of meditation, self-discipline, and the cultivation of inner peace and happiness. He is seen as a spiritual guide who can help seekers to overcome the obstacles that prevent them from realizing their full potential and achieving the state of spiritual enlightenment. Through his disciples, he shared the techniques for the realization of one's true nature as an eternal spiritual being and achieve the ultimate goal of human life, which is self-realization. He encouraged his disciples to practice selfless service and to help others without expecting anything in return, highlighting the importance of service to others as a means of spiritual growth and enlightenment. He cultivated a sense of unity and oneness with all beings, pointing out that all beings are interconnected and part of a greater whole, and the realization of this interconnectedness is a key step on the path to spiritual enlightenment. His mysterious persona continues to intrigue spiritual seekers, and his influence on the spiritual world is beyond doubt. His incarnation as a human and his education under various gurus must have been intentional and purposeful, as he exists at a profoundly elevated level of spiritual consciousness and does not require birth. If you desire to seek him out, we highly recommend that you do so exclusively through a certified and validated Kriya Yoga guru and refrain from attempting to do so independently. We appreciate your presence on this journey exploring the life and teachings of Mahavtar Babaji. Thank you for your support. Take care until next time.
भाई जिंदगी में जो है ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा होना तो आपको जो है ना कुदरत उठाकर वहां तक जो है वो ज़रूर ले जाती है। जैसे महाअवतार बाबा जी की अगर बात की जाए तो देखिए कैसे उनके बचपन में जो है उन्हें किडनैप किया गया, ठीक है, फिर वो एक जागीरदार ही कह लें आप, उनके पास पहुंचते हैं और वो जो है उन्हें फ्री कर देते हैं और वहां से उनकी जिंदगी का एक अलग ही जो है आप कह लें कि सफर स्टार्ट होता है। तो आप देखिए जिंदगी ने जब ऊपर वाले ने आपको कोई एक बहुत ऊंचा मुकाम देना हो ना, तो बेशक आपकी जिंदगी में मुश्किलात आए, लेकिन जो है आप वहां तक पहुंच जाते हैं। देखो जिंदगी में जब ऊंचा मुकाम आता है ना, तो उससे पहले आपकी लाइफ में मुश्किलात ही आती हैं। जो जिंदगी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है ना, उसमें कभी भी आपको इतने एडवेंचर देखने को नहीं मिलते। बट महाअवतार बाबा जी के बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ है काफी, और लेकिन ये कि आज काफी ज्यादा चीजें जो हैं हम लोगों को जानने को मिली। एक तो जो बैकग्राउंड है बचपन से लेकर उनके, फिर जिस तरीके से डिफरेंट डिसाइपल्स जो उनके थे उनके बारे में पता चला, फिर जैसे वो अपनी प्रेजेंस शो करते थे डिफरेंट टाइम्स पे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि वाकई में आप जब समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं जब अभी ये वीडियो देख रही थी तो मेरे माइंड में, जो मैंने पहले भी बताया कि मैंने बुक पढ़ी है कि द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, हाँ, तो सेम वही चीज़ें चल रही थी कि लाइक किस तरीके से इस धरती पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए जब बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो जाती हैं, तो जो हायर पावर्स होती हैं वो मतलब ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं जो कि आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाए। वो ये भी नहीं चाहते कि आप भी वहां पर आकर हमेशा के लिए हो जाए, क्योंकि आपका धर्म उस टाइम पर कुछ और होता है। आपका धर्म होता है कि आप लोगों में जाकर जो वो मैसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करें। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि चूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मैं कभी कभी ये देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो टोटली चेंज हो जाती है 360 के एंगल से, जब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही मटीरियलिस्टिक टाइम देखा होता है और उसके बाद उनको कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो कि उनकी लाइफ टोटली चेंज कर देता है और वो बाकी सबको वो चीजें सिखा रहे होते हैं। भाई जहाँ देखें आपने बैलेंस की बात की है ना, तो देखिए धरती एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है ना, मेरा ख्याल है कि आपको बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। अगर बैलेंस ना हो तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जमीन जो है ना, ये उस तरह से कभी ना दिखाई दे जिस तरह से जो है हमें दिखाई देती हैं। अगर एक साइड पे आपको दरख्त काटने वाले नजर आते हैं ना, तो दूसरी साइड पे आपको दरख्त लगाने वाले भी जो है ना वो नजर आते हैं। तो देखा जाए तो एक बैलेंस जो है वो रहता है। और जहाँ तक महाअवतार बाबा जी की अगर बात मैं करूँ तो भाई जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया, श्रीलंका से लेकर हिमालय तक का उनका जो सफ़र था, भाई नो डाउट अभी हमने जो वीडियो देखी है 9 मिनट की, इसमें तो भाई एक बहुत वो कह लें मोटी मोटी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं हमें सिर्फ वही बताई गई हैं, लेकिन जो उसके अंदर एक बारीकियाँ होती हैं, जैसे एक आम बंदे की ज़िंदगी आप बायोपिक उसकी लिखते हैं, एक पूरी बुक लिखते हैं, तो भाई उसमें आप छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं उसकी बताते हैं कि भाई क्या मुश्किलात आई, क्या चीज़ उन्होंने अचीव की, कौन उनका गुरु रहा। क्योंकि लिटरली गुरु जो है ना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका गुरु अच्छा होगा ना, वो आपको हमेशा राइट डायरेक्शन दिखाएगा, आपको दीवारें खड़ी करना नहीं बताएगा, वो आपको पुल बनाना बताएगा। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मुझे लगता है कि आप जितनी चीज़ें देखते हो ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हम लोगों ने आज तक जितनी भी वीडियोस देखे हैं, आपको ट्रू सेंस नज़र आती है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। क्योंकि जैसे मौज़म ने अभी बात बोली, आपको इन डेप्थ कभी भी कोई इतना नॉलेज वाला मतलब यूजुअली नहीं मिलता। मैं यहाँ के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, बट जब मैं वीडियोस देखती हूँ या मैं कुछ ऐसे आपके लोगों के आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, चीज़ें पढ़ती हूँ, तो मुझे आइडिया होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको मतलब समझ में आ रही होती हैं कि क्या मतलब है इन चीज़ों का। बाकी मैं ये जरूर बोलूंगी कि योगानंद जी जो हैं, हाँ, उनके बारे में भी कि लाइक क्रिया योगा का हमें उनकी वीडियो देखकर पता चला, तो मुझे लगता है कि क्रिया योगा वाकई में बहुत एक डिफिकल्ट है, अपनी लाइक ब्रीथ को कंट्रोल करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पढ़ते हो ना, आप उतना ज्यादा डिटेल में जाना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा इसके भी इतने फायदे हैं या इससे भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं।
तो मैं कहूँगी कि जो एंशियंट नॉलेज है वो जब आप पढ़ते हो ना तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो मिस्ट्रीज है ना वो सामने आती हैं। एनीवे गाइस, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी वीडियो थी, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और इसके अलावा और कोई बात अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ज़रूर हमें बताइएगा। अगर हमें किसी चीज़ की या पॉइंट की ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।